Dear student, today our topic is fiscal policy. Fiscal policy is related with government revenue, government expenditure and budget. Dear student, the policy concerned with government revenue, government expenditure and budget is known as fiscal policy. Fiscal policy. It is also known as, जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसको हिंदी में राजकोषीय नीति भी कहते हैं. सो फिस्कल पॉलिसी के मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 1 गवर्नमेंट रिवेन्यू, नंबर 2 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नंबर 3 बजट. The policy which is concerned with government revenue, government budget and government expenditure is known as fiscal policy. Components of fiscal policy. And fiscal policy in case of excess demand, how excess demand can be combated with the help of fiscal policy. Dear student, we know excess demand mean when AD is greater than AS corresponding to full employment level. We know AD is more than AS corresponding to full employment level and we have to reduce aggregate demand. हमने एग्रीगेट डिमांड को कम करना है. एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए हमारा मेन मोटिव कंज्यूमर की इनकम को रिड्यूस करना होता है, कंज्यूमर की इनकम को कम करना होता है. अगर हम कंज्यूमर की इनकम को कम कर देते हैं वी कैन करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड. लेट्स सी नंबर 1 फर्स्ट कंपोनेंट्स होता है टैक्स. नंबर 1 टैक्स. टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट. जो टैक्स होता है वो क्या है? एक कंपल्सरी पेमेंट है जो हमें गवर्नमेंट को देनी पड़ती है. इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच वी हैव टू मेक गवर्नमेंट. एंड इन केस ऑफ टैक्स, जब हमारे ऊपर टैक्स लग जाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो है परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है. जब हमारी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम डिमांड लेस करते हैं. लेस डिमांड होने से क्या होगा कि जो हमारी एक्सेस की प्रॉब्लम है, एक्सेस की जो प्रॉब्लम है हमारी, वो क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी. ओके, तो लेट्स सी इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड द नंबर 1 फर्स्ट कंपोनेंट इज टैक्सेस. According to fiscal policy, tax should be imposed. Rate of tax should be increased. Rate of tax should increase in order to correct the problem of excess demand. When rate of tax is increasing, purchasing power of public decrease. Public left with less purchasing power. Less purchasing power. Public left with less purchasing power. When purchasing power of public decrease, they demand less and problem of excess demand solved. Next देखिए second component, borrowing, उधार लेना. In order to correct the problem of excess demand, government should borrow more and more money from public. अब जब पब्लिक से मोर मनी बोरो की जाएगी, पब्लिक का कैश जो है वो किसके पास चला जाएगा, पब्लिक का कैश चला जाएगा गवर्नमेंट के पास. बाय स्कीम्स पब्लिक का कैश गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और पब्लिक क्या होगी, नो कैश होगा पब्लिक के पास, नो कैश. एंड नो एस विदाउट कैश. जब उसके पास कैश होगा ही नहीं तो वो डिमांड क्या करेगी, लेस करेगी. पब्लिक की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और जो एक्सेस की प्रॉब्लम थी वो क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी. देखिए इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड पब्लिक बोरोइंग शुड बी इंक्रीज.
public borrowing should be increased. As a result, public the flow of cash increase to the government या flow of cash move to the government and public left with no cash या less cash, no as without cash we can't purchase anything. As a result, demand of public decrease and problem of excess demand solved. Dear student, third component is public expenditure. In case of excess demand, public expenditure should be decreased. Public expenditure should be decreased. We know one man consumption is another man income. One man expenditure is another man's income. जब एक व्यक्ति का expenditure increase होता है, when government increase expenditure, public gain. But in case when government expenditure decrease, it will reduce to income of the public. Income of public decrease. As a result, cash of public decrease. When cash decrease, no demand and less demand. Problem of excess demand solved. देखिए, in case of excess demand, public expenditure should be decreased. As a result, when government decrease their expenditure, income of public decrease because one man expenditure is another man's income. When government reduce their expenditure, it will help to reduce the income of the public. As a result, cash of public reduce. When cash reduce, there is less demand or no demand and problem of excess demand solved. Next. Budget. In case of excess demand, government should adopt saving budget. Saving budget. Saving budget is that budget in which government expenditure is less and income is more. Government expenditure is less than government income. When government's expenditure is less, it means income of public is less. Public की income decrease हो जाएगी. When income of public decrease, public demand less. When public demand less, problem of excess demand solved. Let's see again. In case of excess demand, government should adopt saving budget. Saving budget is that budget in which government expenditure is less than government income. When government expenditure less, it will help to reduce income of the public. When income of public reduce, demand of public reduce and it help to solve the problem of excess demand.